Hello, everyone. Welcome to the first webinar we have on reaction kinetics. In this time of distress, let's make it useful and runny. Okay. So I hope that you know now the early chapters of physical chem, right? As soon as we end reaction kinetics, we start off with organic. We'll complete organic, and then the short part inorganic will be left. Of course, we'll be doing questions along so that you stay in touch. But in fact, you stay very much connected. So, guys, this is the last chapter we have of physical chem, in which we start learning that a reaction can be described as either fast or slow reaction. Fast reaction means instantaneous, low activation energy. Slow means high activation energy. Like for example, slow reactions जो हैं rusting हो गई, let's say fruit ripening process हो गया, fast neutralization हो गया, फिर you can say let's say combustion burning. इनफैक्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ते हैं, तो आई थिंक दीज विल रिक्वायर अ बिट हायर एक्टिवेशन एनर्जीज रादर रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस लाइक न्यूट्रलाइजेशन फ्री आयंस आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं. तो आई थिंक आयंस का आपस में अट्रैक्ट करना विल बी मच फास्टर रिएक्शन दैन के पहले रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटे, फिर एटम पहले आप डिसिपेट हो, फिर बाद में शेयरिंग करें. So that's why we normally say in chemistry covalent reactions usually have high activation energy and the ionic usually have low activation energy. लेकिन just for a while, how will you come to know कि एक reaction देख के कि this reaction has high activation energy or low activation energy? तो ये बता देखें bond energy of reactants. अगर तो reactant की bond energy बहुत high है, for example N triple bond N, so it means that the system will require high activation energy. And what if the reactants have same charges? For example, S2O8 का react करना iodide ion के साथ, giving you sulfate ion plus iodine. This reaction की observation is colorless to brown as well. तो I think that कि यहाँ पे ये दोनों reactants जो हैं वो negatively charged हैं, इनका आपस में collide करना is too difficult. It means these two reactions, basically 1 and 2, should require like a high activation energy and should require a catalyst too for working. But guys, क्या हम slow reactions को fast और fast slow कर सकते हैं? Yes, we can. So for that, we start learning factors affecting rate of reaction. So guys, it's temperature. So this factor says that when we increase the temperature, average kinetic energy of molecules increases. Now, something very important needs to be discussed here. That is, at one temperature, let's say it's 40 degrees Celsius, we can't say that all particles have same energy. So we talk about average energy concept. So we say at one temperature, average energy of particles is, let's say, of course, one value. Now, when I increase temperature from 40 to 80, so average energy increases by the same factor. So it means that by increasing the temperature, we say the average kinetic energy of particles increases proportionally, which results in greater frequency of effective collisions. और जब ये effective collisions increase करेंगी तो we expect that rate should increase. But then there is one more catch to it. Let's see. So basically ये तो factor हो गया जो हम O level से पढ़ के आ रहे हैं. इसका catch ये है कि मुझे बताएं, suppose करें कि एक reaction vessel है और let's say उसमें reacting particles हैं, let's say 100, ठीक है, और let's say उस reaction की energy of activation is 50 joules, let's say. तो काफ़ी पार्टिकल्स होंगे जिनकी एनर्जी 50 से कम होगी और कुछ होंगे जिनकी ज़्यादा होगी. सो कैन आई से कि पार्टिकल्स with energy less than activation energy, and I can say particles with energy more than activation energy at a certain temperature. Let's say they are 70, let's say they are 30. Meaning 30 particles will take part in the reaction. These 30 particles will take part in the reaction. Now, when I increase the temperature, let's say it's T1, right? Where T1 is more than T, तो क्या होगा कि अब जो particles इनकी energy 48 जूल थी, अब वो भी 50 क्रॉस कर सकते हैं, 45 वाले भी क्रॉस कर सकते हैं. तो can I say that कि these number of particles have increased, so these will automatically decrease, right? So the second factor sustains, and that says that when temperature increases, so we can say at higher temperature, more number of particles
with energy greater than energy of activation exist. Therefore, rate will increase. Is that so? But let's say, for example, if I reduce the temperature, अगर मैं temperature reduce करता हूँ, let's say, ठीक है, if it's T2 and let's say T2 is less than T, ये हमारे लिए standard है, ठीक है. अब जो particles इनकी energy I think पहले 50 joules थे, अब क्या पता वो भी 45 हो गई हो, तो I think ये particles कम हो जाएंगे, तो ये automatically बढ़ जाएंगे. This phenomenon was actually explained by Boltzmann distribution curve, right? In fact, it was by Maxwell Boltzmann, जिसको हम रेफर करते हैं एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो इट्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज, राइट, इन विच वी ड्रॉ द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, on x we have energy value, right? Let's say this is your energy of activation, और ये कर्व बनता है. लेट्स से ये वाले पार्टिकल्स हैं, ये आपके 30 पार्टिकल्स हैं at temperature T which take part in the reaction. And remember that area under curve is number of particles, right? Now when I increase the temperature, so this area will actually increase, this area will decrease. One thing. Second thing, the graph will move towards right hand side. Graph right पे shift करेगा, right? So basically होगा क्या होगा, ये असल में ये area will increase, this area will decrease and the graph will shift forward because सारे particles की energy बढ़ेगी ना. So how it looks like? So let's see the graph. So at high temperature, altogether the graph shifts here. This area decreases and this area increases. So now these are 40 particles we have. It's T1. देखिए ना peak height change कर गई है. लेकिन अगर temperature low कर दूँ मैं, let's say for example, तो now I expect that कि this area should actually decrease and this should increase and the graph should go back, right? So basically, let's see how this looks like. Now this goes up and this goes here. So this, therefore, ये वो आपके 20 particles जो कि आप reaction में part लेंगे. Now that is T2. So you've seen that how the temperature affects proportion of particles, I mean the distribution of particles with certain energy values. It's like like a belt distribution, a frequency distribution curve like in mathematics. So temperature affects this proportion. Now the next factor we have is pressure and concentration. Both have same phenomenon which we learned since O level as well, but let's see. So guys, you can see that pressure is only for gases, but concentration may be for gases or liquids. Now when you increase the pressure, right? So what happens? Volume decreases, and can I say particles come closer? So particles per unit volume have increased, which means the frequency of collisions will actually increase. That's why I think since O level we've been learning that higher the pressure, higher the rate. Now in terms of concentration, as you can see, if I increase number of particles from this area to this area, so again I have more number of particles per unit volume. So I think the phenomenon is exactly same. That is actually number of particles per unit volume, number of particles per unit volume, which result in greater frequency of collision, and thus rate increases. But remember, concentration is both for gases and liquids, and you know that whenever reaction starts off, the rate of reaction is maximum because concentration of reactants is maximum is what we expect. So high the pressure, high the rate, high the concentration, high the rate. Okay. So everyone, the fourth factor is actually particle size, right? So the factor says कि वैसे I think आप O level से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर larger lumps हों, ठीक है, वो इतना जल्दी react नहीं करते क्योंकि हम बात करते हैं 3 size of particles की. ऐसे ही है, यानी कि lumps, ठीक है, chips and powder. I think हम O level से पढ़ते आ रहे हैं कि the slowest rate should be with lumps,
the greatest rate should be with powdered. True? Now, when the particle size is small, it means it has higher surface area. सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज व्हाट वी टॉक अबाउट. ठीक है, मैं यहाँ पे एक आई यूजली मेक दिस ड्राइंग इज वेल टू टेल यू. देखिए, आई थिंक एग्जांपल अबाउट एलिफेंट एंड माउस इज वेरी कूल, दो माई ड्राइंग इज पैथेटिक. एलिफेंट डज नॉट लुक लाइक एलिफेंट. ठीक है, बट देन आई थिंक दैट कि एलिफेंट हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया. हाथी बड़ा है चूहे से, इजंट इट? But then surface area to volume ratio for mouse is actually greater. But in chemistry, when we write the word surface area, it automatically implies that we're talking about surface area to volume ratio. So smaller the particle size, greater the surface area, greater the frequency of collisions, and higher the rate. Right? Let's see the fifth factor. It's catalyst. So gather everyone. The fifth factor is catalyst. Okay, so catalyst का purpose क्या है? It will increase rate of reaction. हम O level से पढ़ते आ रहे हैं. How? तो by providing an alternative pathway which has low activation energy. Is it? और ये हम diagram O level से पढ़ते आ रहे हैं कि ये black line is for the uncatalyzed and red is for the catalyzed. Right? So you're seeing that कि how the catalyst will alter the pathway which has low activation energy. ये हमने क्लियर में भी पढ़ा था कि हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द एक्टिवेशन एनर्जी. देखो, कैटलिस्ट मैंने स्टार्ट में बताया था, कैटलिस्ट ऑलवेज टेक पार्ट इन द रिएक्शन. इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट यूज्ड अप. आई थिंक इट्स रिप्लेनिश्ड. ट्रू. लेकिन कैटलिस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है इंथैल्पी के ऊपर. प्लीज़, कोई इम्पैक्ट नहीं है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर. बस एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक रिएक्शन कम हो गई, एंड दैट्स ऑल. And when this catalyst when this catalyst causes catalysis, the catalysis can be of three types. It can be homogeneous, heterogeneous, or auto. So guys, this is homogeneous catalysis, right? एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड में SO2O2 का और H2O8 और आयोडाइड का, isn't it? और द थर्ड रिएक्शन इज इन A2, जिसकी ऑब्जर्वेशन कर्लिच ब्राउन भी है. Let's see the second reaction in detail. So guys, let's see the atmospheric oxidation of SO2, right? We can use NO2 or NO both as catalysts. कोई भी ले सकते हैं. It depends on the question which we are asking you. हाँ, अगर आपने NO2 as a catalyst use किया है, तो you can see, right? So basically, अगर आप गौर करें, like if you see actually, तो just a moment please. So are you seeing that कि NO2 is reacting with SO2 and giving you SO3 and NO. NO is the intermediate. तो यानी कि आप गौर करें कि एक रिएक्टेंट जब यूज अप हो गया, अब बारी दूसरे रिएक्टेंट की, तो intermediate will react with the other reactant and will regenerate NO2, which is acting as a catalyst. अच्छा, अगर NO होता catalyst, तो I think वही reaction mechanism है, if you see, but सिर्फ खाली sequence change कर गया, isn't it? Just focus. Only the sequence has changed, the reaction is same. अगर NO2 catalyst है तो SO2 react कर जाएगा पहले, अगर NO catalyst है फिर O2 react कर जाएगा पहले. I think the story remains same.
All right. So, guys, this is heterogeneous where reactants and catalysts have different physical states. I think the very famous we have are the Haber's process, right? The contacts process and formation of margarine, let's say, or even I think reactions on catalytic converter. So, reactions on catalytic converter are also examples of heterogeneous catalysis. Is that so? Okay, everyone. Let's see autocatalysis now. So, guys, everyone, in autocatalysis is when actually one of the products acts as a catalyst. ठीक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑक्सीडाइज करते हैं, मेथनोइक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड एंड विद एसिडिफाइड मैंगनेट. ठीक है, और ये रिएक्शन एग्जाम्पल बन जाएगी ऑटोक्लासिस की. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एसिडिफाइड मैंगनेट, अगर मेरे पास एसिडिफाइड मैंगनेट हो, मैं इसको रिएक्ट करा दूँ विद आइदर मेथनोइक एसिड or you can say oxalic acid H2C2O4. So by the way, this is oxalic acid. It's also called as ethane dioic acid. तो हम इसको ethane dioic acid भी कहते हैं. अगर इसको react कराएं, this gives you manganese, I mean purple to colorless, plus CO2 plus H2O. Now this Mn plus 2 is your autocatalyst. ये रिएक्शन बहुत स्लो शुरू होता है, लेकिन जैसे ही मैंगनीज बनना शुरू होता है, फिर मैंगनीज रिएक्शन को कैटलाइज करके उसको तेज करता है. तो इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ रिएक्शन. हालांकि नॉर्मली केमिस्ट्री में रिएक्शन जब शुरू होते हैं तो उनका रेट फास्ट होता है. आई थिंक ये रिएक्शन शुरू तो इसका रेट स्लो होगा, फिर मैंगनीज की प्रोडक्शन के ऊपर इसका रेट बढ़ेगा. राइट, इफ आई मेक द ग्राफ ऑफ इट, तो आई थिंक इट लुक्स लाइक दिस. अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मैंगनेट आई मीन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस. राइट, यानी कि वो बेसिकली स्टार्ट में स्लो रिएक्शन है, फिर जब मैंगनीज बनना शुरू हुआ तो एकदम रिएक्शन तेज़ हो गया. एक वक्त आएगा रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन ख़त्म हो जाएंगे, रेट ख़त्म हो जाएगा. राइट, लेकिन ये स्टार्ट में स्लो है. हालांकि अनकन्वेंशनली जो केमिस्ट्री में ग्राफ बनते हैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, अगेंस्ट टाइम, तो वो स्टार्ट में स्टीप होते हैं. दे आर स्टीप एट स्टार्ट. आर सीइंग, दे आर स्टीप. ये स्टार्ट में लेस स्टीप है, ये बाद में स्टीप हुआ है. तो इट मीन्स दैट इट्स एन ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन. ये रिएक्शन स्टार्ट में स्लो था, और साइमल्टेनियसली अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ फॉर लेट्स से रेट अगेंस्ट टाइम, तो आई थिंक दैट स्टार्ट में रेट कम है, एकदम बढ़ता है, एंड देन इवेंचुअली इट फॉर्म्स, I mean, reaction ends and the rate starts dropping. तो autocatalytic reactions के जो graphs हैं, they are very unconventional graphs and they're very different from rest of the chemistry. So guys, ये थे 5 factors affecting rate of reaction: temperature, pressure, concentration, size of particle, and catalyst. Now, let's see about reaction mechanism and some energy profile diagrams. So guys, everyone, in reaction mechanism हमें पता है, देखें, हमें we know that very clearly कि reactants convert into products. It's what we have been learning. But I must tell you, even the simplest of reactions, what happens is कि reactants first convert into intermediates. पहले reactant अपने intermediate में आता है, फिर वो intermediate से होके it actually goes in the products. So in reality, the actual pathway is this. Now that is the actual pathway. ये जो हमने बनाया हुआ है ब्लैक से, राइट, जो हमने बनाया हुआ है ब्लैक से बेसिकली ये वाला, ये तो उसका एक समेटिव इफेक्ट है. असल रिएक्शन तो ये हुआ कि रिएक्टेंट गए इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर. अब जो रिएक्टेंट्स हैं एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट्स आर लाइक स्टेबल कॉम्पाउंड्स. आई मीन प्रोडक्ट्स भी स्टेबल कॉम्पाउंड्स हैं, इंटरमीडिएट्स एक अनस्टेबल कॉम्पाउंड्स हैं. तो आई थिंक रिएक्टेंट भी स्टेबल, ठीक है, रिएक्टेंट भी स्टेबल, प्रोडक्ट भी स्टेबल, दैन इंटरमीडिएट. अब इशू ये है, स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल करना मुश्किल है या फिर अनस्टेबल को स्टेबल. तो आई थिंक द आंसर इज स्टेबल को अनस्टेबल करना मुश्किल है. दैट्स वाई
This reaction requires high energy of activation, and this requires low energy of activation. कि स्टेबल चीज़ को आप अनस्टेबल करेंगे मुश्किल होता है करना. और अगर ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी है फिर ये स्लो रिएक्शन हुआ, एंड दैट विल बी अ फास्ट रिएक्शन. और अब स्लो कितना, बड़ी मज़े की बात है. सपोज करें आपने रिएक्टेंट्स मिक्स किए और आपने स्टॉप वॉच शुरू कर दी. लेट्स से यू टाइम्ड एन ऑब्जर्वेशन एंड द टाइम इट टुक वाज 100 सेकंड्स. तो समझे कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 100 सेकंड लगे. पता है उन 100 सेकंड में से 99.9 सेकंड ये लग गए होंगे, हार्डली 0.1 यहाँ लगा होगा. तो कहना ऐसे कि सारा टाइम जो रिएक्शन को लगा वो तो यहीं लग गया. तो असल जो आप कहते हैं ना कि मैंने रेट निकाला एक रिएक्शन का, वो टेक्निकल में रेट निकाला होता है स्लो स्टेप का. दैट्स व्हाई इन केमिस्ट्री रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली रेट ऑफ स्लो स्टेप. You know, so that's how the reaction pathway goes. But then its significance is very high in organic and it's very high in A2 reaction kinetics. Because apart from kinetics, I think one thing is obvious कि ज़ाहिर बात है, reactant to intermediate is a reaction. It can be exo-endo. Intermediate product is again, exo-endo. Final reaction can be एक्सो-एंडो, क्योंकि आफ्टर है तो इंडिविजुअल रिएक्शन ही. अगर हम ये चीज़ ऑब्जर्व करके अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लें तो हाउ डू वी गो अबाउट इट. तो लेट्स सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स. अच्छा सपोज करें, एक मैं बनाता हूँ, ठीक है. सपोज करें कि रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट, let's say just random, let's say it was exothermic, and let's say intermediate to product is also exo, and I tell you कि reactant to product is exo. जब तक वो लेवल था तो आपने ये किया कि reactant to product is exo बस. But where is the intermediate? So now A level comes in. So where is the intermediate actually? So it goes like this. So reactant to intermediate is exothermic reaction, and then intermediate to product is again exothermic reaction, और finally ये भी exo होना चाहिए, isn't it? अब गौर करें, first activation energy is higher and second is lower. So first harm should be bigger and second should be smaller, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि first was high activation energy. वैसे कॉमन सेंस है यार, अगर रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट अगर एक्सो है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी एक्सो है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी एक्सो होना चाहिए. बट देन लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन इट. ओके सो एवरीवन, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. अच्छा अब यहाँ पे रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट एंडो, ठीक है. तो ये रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट इज एंडो, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट भी एंडो है. तो दिस गोज अप अगेन और लाइक दिस, इट्स एंडो. तो ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स एंडोथर्मिक, इजंट इट? तो अब गौर करें, द फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर, द सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी should be smaller, right? You can try with one more example. So it can be like this. रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है.
The reactant to intermediate is endothermic. Sorry. Reactant, intermediate, endothermic. Intermediate to product is exo. तो यहाँ से exo. तो ये overall exo हो गया. Right? So I think the energy of activation is different. Is that so? So that's how the energy profile diagrams can also be observed. So basically these were the 5 factors which affect rate of reaction, right? And then some energy profile diagrams and and then of course you should know about the reaction pathway. So the next part, that's very crucial and that's very important, right? So it is basically the ways to find out rate of reaction. I mean, how to find out rate of reaction, right? Let's go about it. So guys, how to measure rate of reaction? अच्छा, first let's understand, जब आपने rate find करना है तो आपके पास कोई observation होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो reactant के terms में या product के terms में हो, और any change in reactant or over time or any change in product over time, this can define rate of reaction. Observations काफ़ी types की हो सकती हैं. Observation can be volume of gas produced, right? यानी कि observations जो हैं, it can be volume of gas, it can be change in mass of contents, it can be change in temperature, I mean it can be change in pH, it can be change in electrical conductivity. अगर for example जो ions हैं अगर वो precipitate दे रहे हैं तो ये भी हो सकता है, right? So basically it can be change in color as well, I mean etc. We have many observations of a reaction which can be timed. When once timed, we can find out rate of reaction. ठीक है, चलिए इसमें से let's see our 2 phenomena. One is volume of gas and एक लेते हैं mass of contents. ठीक है, let's observe the concept. You can always take a picture so that we can go quick in the webinar. Okay, there we go. Okay, so let's see measuring the volume of gas given off concept. Let's take a very famous reaction, calcium carbonate hydrochloric acid. ठीक है, और suppose करें calcium carbonate is actually powdered. ठीक है, तो what you do is कि हम यहाँ पे एक बांध देते हैं thread. ठीक है, हमने thread ऐसे बांधी होती है कि when we have to pull the thread, ठीक है, तो यहाँ से calcium carbonate गिरता है इसके अंदर and CO2 gas released is collected. It should be sealed before the reaction starts off. So I think it's sealed before the reaction starts off because it's a very spontaneous reaction we have. Now, जैसे ही आप ये thread को pull करते हैं, ठीक है, आप stopwatch शुरू कर देते हैं. तो stopwatch basically, I mean you have a stopwatch as well, right? तो you have a stopwatch as well. जैसे ही thread pull करते हैं, आप stopwatch शुरू करते हैं, and at regular time intervals, you note the volume of gas produced, and then you can draw the graph. Are you seeing that the rate of reaction is fastest at start, right? It's fastest at the rate of reaction is fastest at start, right? And then of course the rate slows down, right? Reaction decreases. Eventually वक्त आता है कि यहाँ पे let's say for example HCl, अगर HCl limiting है, let's say HCl has been used up, so we can say that reaction is ended basically. So reaction starts off fastest because concentration of reactants is fastest, then it slows down, eventually it forms a plateau. ठीक है, ये phenomenon क्या यहाँ पे कि basically you are actually starting the stopwatch as soon as you drop calcium carbonate, and at regular time intervals you note the volume of gas produced and the graph is collected, gradient is drawn, and that gradient is actually rate because जब y axis पर time होता है तो graph का gradient is rate.
तो you can say that gradient is rate. All right, let's see more. So everyone, this is an alternate method, right, to monitor the rate of reaction. I mean, same reaction we're using, but now it's actually an open flask, right? So we will actually measure the mass. Okay, in fact, weigh the mass basically. So it's actually mass of contents against time. That's in seconds. At time zero, let's say mass is 200. Reaction शुरू नहीं हुआ. As soon as we put this calcium carbonate into this flask, right, we start the stopwatch. और हम इसके ऊपर एक cotton wool plug भी लगा देंगे. So basically after regular time intervals, यानी कि regular time intervals के बाद हम यहाँ पे mass of contents नोट कर लेते हैं. एक वक्त आएगा contents का mass constant हो जाएगा. As simple as that, right? Now यहाँ पे आपने cotton wool plug क्यों लगाया है? So एक तो देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस निकली तो एसिड स्प्रे होगा. हम नहीं चाहते कि मास लॉस एसिड स्प्रे की वजह से हो. वी वांट मास लॉस खाली गैस की वजह से हो, राइट? सो दैट्स व्हाई टू इंप्रूव एक्यूरेसी वी एक्चुअली प्लेस अ कॉटन वूल प्लग बट नॉट रबर बंक. गैस उससे एस्केप ही नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है कि अगर एक रिएक्शन से मास लॉस होता तो वो गैस की वजह से ही होता है. मास लॉस गैस निकलेगी तो मास लॉस होगा, वरना मास लॉस नहीं हो सकता. एंड देन दीज पॉइंट्स एक्चुअली कैन बी प्लॉटेड, राइट? हम मास को प्लॉट कर सकते हैं अगेंस्ट टाइम. लेट्स से द मास बिकम्स लाइक दिस. अब अगर आपने लम्प्स यूज़ किए हैं तो लेट्स से ये आ गया ग्राफ. और लेट्स से अगर मैं यूज़ करता हूँ पाउडर्ड तो आई थिंक ग्राफ स्टीप हो जाएगा, लेकिन ख़त्म तो वही करेगा ना. नाउ दिस वाज फॉर पाउडर्ड क्योंकि पाउडर डेट का ज़्यादा होता है. इज दैट सो? ओके, आई हैव सम एक्सपेरिमेंट्स शेयर विद यू एज वेल. ऑफ कोर्स आप लैब में भी करते होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट यू हैव अ नाइस आइडिया कि हम आपसे इसके ऊपर एक आध MCQ पूछ सकते हैं, राइट? लेट्स गो अबाउट इट. So it's an experiment of reaction of 2 grams of an excess powdered calcium carbonate with HCl, right? At regular time intervals, we are measuring the volume of gas produced. So you can see the graph. The graph is steepest at start. And in part A, B, and C, he's asking the questions and which I've answered as A, B, and C. आप देख लें एक मरतबा कि किस तरह कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब एक वक्त आएगा कि HCl खत्म हो जाएगा ना. आर यू सीइंग दैट कि दीज टू वैल्यूज हैव बिकम कांस्टेंट? दैट्स सो. Let's see further. So that's the answer to part B and part C. कि ग्रेडियंट कैसे निकालना है, पार्ट बी हो गया. और पार्ट सी में उसने ये कहा था कि किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ कैसे जा रहा है. सही बात है, स्टार्ट में रिएक्शन फास्टेस्ट है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन फास्टेस्ट, प्राइस द मोल्स यूज अप हो रहे हैं. तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा बिकॉज वॉल्यूम मेन सेम. कॉन्सेंट डिक्रीज करेगी, रेट डिक्रीज करेगा, विच फॉर्म्स अ प्लेटो when all the acid is used up. तो देखिए आप, all acid has been used up. Now this needs to be mentioned. If it's mentioned, you score the marks. Okay, let's see more. Okay, that's a comparison because in the other example, in my earlier example, calcium carbonate was powdered. Now it's in lumps. तो अब गौर कर लें कि इसके फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर गैस जो निकली है वो है 5 cm3. ठीक, नोटेड. अब देखें उसके 10 cm3 में गैस निकल रही है 25 cm3. और सीइंग
right? This proves that a powdered calcium carbonate will show a greater rate. देखें यहाँ पे 80 सेकेंड्स में 80 वॉल्यूम ऑफ गैस निकली है, और यहाँ पे 80 सेकेंड्स के अंदर इफ़ यू सी तो इसके 80 सेकेंड्स में 31 सेम निकली है. इसका मतलब ये नहीं है, राइट? इसका मतलब ये है कि रेट में फ़र्क है. इवेंचुअली अगर मैं दोनों को अलाउ करूँ कि अपना रिएक्शन कंप्लीट करें, तो यहाँ भी इस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 80 सेम गैस निकलेगी, लेकिन इट विल टेक लॉन्गर टाइम बिकॉज रेट स्लो है. ओके, so there we go with the worked example, as you can see. और surface area of lump का मतलब है कि basically surface to volume ratio. Okay. Let's see one more example. So guys, this is the reaction of hydrochloric acid with thiosulfate, a very famous reaction. इसमें sulfur की deposition होती है, and we can actually time the reaction and observe the disappearance of the mark. I think आप ये practicals भी करते होंगे इसके बारे में, जहाँ पे आपको insert देते हैं and then it becomes opaque, और फिर आप time note करते हैं उसके opaque होने का. Like in this question, I think that we are doing a reaction of hydrochloric acid and sodium thiosulfate giving you sulfur deposit, right? And the rate of the reaction may be determined by measuring how long it takes for the solution to become opaque so that it crosses the pH. Now in this experiment, we are changing thiosulfate concentration and keeping HCl constant. तो हमें ये देखना है कि thiosulfate change करने से क्या impact आता है rate के ऊपर. तो हमने हर दफ़ा time note किया, right? For the insert to disappear. बल्कि इसकी diagram भी I can show you. Now, of course, you can actually work on these A, B, and C, but the diagram, I can also show you the diagram as well. Okay? So I hope आपको deja vu हुआ होगा. Such experiments you've been doing in the laboratory as well, and we still ask you 1 or 2 marks question in B2 as well. Okay? Let's see a question now. So guys, that's a question. It's actually June 17 to 2, right? Question 3. So he says that the hydrogen halides HCl, HBr, and HI can undergo thermal decomposition, of course, in a sealed container, and equilibrium is established. Bond energies दी हुई हैं. Part A में कहता है use these data to calculate a value of the enthalpy change for thermal decomposition of hydrogen bromide according to the following equation. Guys, whenever you find out the enthalpy change of a reaction using bond energy values, it's always reactants minus fluids. तो delta is equals to reactants minus fluids. और हमने निकालना enthalpy change ही है, और निकालनी किसकी हमने HBr की. तो H2 जो है it's 436, right? Sorry, हमने decomposition की वैल्यू निकालनी है ना. तो HBr की वैल्यू क्या है? It's 193 into 2 reactants minus fluids is H2 and HBr. It is 436 plus 366. Alright, let me calculate. So I think the value comes up to be positive 103. So it's positive 103. Thermal decomposition. So I think it's endothermic now.
Now, at 700 Kelvin, a sample of HBr is approximately 10% decomposed. Changing the temperature affects both the rate and decomposition of HBr and percentage that decomposes. अच्छा, rate का मतलब है reaction kinetics. Percentage का मतलब है yield. Percentage means Le Chatelier's. This means collisions. The Boltzmann distribution of this is shown. E is activation energy of the reaction. Using same axis, sketch a second curve Boltzmann at a high temperature. High का मतलब है कि you have to go with this sort of graph, right? Because you expect greater area in this region, a smaller area in this region, and the graph shifts towards right hand side. Is that so? Now, next, with reference to the curve, state and explain the effect of increasing temperature on decomposition of HBr. Wait, state and explain the effect of increasing the temperature, right? So basically, how do you say about that? तो पहले तो state, तो इसका मतलब है an increase in temperature, rate increases, right? So increasing temperature will increase rate. Look at first point. For second point, I think at higher temperature, we have greater frequency of effective collisions. Greater frequency of effective collisions. Right? And then, Boltzmann का आपको अगर याद हो, तो at high temperature, more number of particles with energy more than activation energy are there. Right? So we can say that के more number of particles with energy greater than or equal to activation energy. So you score 3 marks. अब ये बात हो रही है रेट की, तो बात होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स की, isn't it? अब यहाँ बात होगी परसेंटेज की, तो यहाँ बात होगी ली शार्टेस्ट प्रिंसिपल की. बट हाउ कहते हैं द decomposition of HBr is endothermic. State the effect of increasing temperature on the percentage of HBr that decomposes. Use Le Chatelier's principle to explain your answer. अगर यहाँ पे Le Chatelier's का जिक्र नहीं आएगा तो we'll cut the mark. वैसे I think the percentage of decomposition will increase because forward reaction endothermic है, तो we can say कि percentage decomposition increases. 1 mark तो नहीं मिल जाएगा. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि I think forward side is endothermic, right? तो position of equilibrium will shift forward as forward reaction is endothermic, right? और उसका अगर reference देना है of Le Chatelier's principle, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने सिस्टम फॉरवर्ड क्यों गया? तो इट एक्चुअली अपोज द चेंज, राइट? तो टू अपोज द चेंज यानी कि यू कैन से टू अपोज द हाई टेम्परेचर. ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़ने के सवाल रेट के बारे में या सवाल यील्ड के बारे में. रेट इज collisions, yield is Le Chatelier's. Now इसे कहते हैं कि at 700 Kelvin HBr is approximately 10% decomposed, लेकिन HI is 20%. I think it's for sure कि HI has a weaker bond. Do you want to explain this difference between bond strength and factors that affect them? तो we can say कि HI bond is weaker. तो एक मार्क को आपको इधर मिल जाएगा than HBr, isn't it? क्योंकि iodine atom is bigger than bromine, which results in greater bond length. Second mark. इस वजह से
overlapping of orbitals becomes ineffective. That's how you explain for and score the 3 marks, please. ठीक है, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ की टर्म में आंसर आ जाए, फिर आपकी ओवरलैपिंग आती है, आपकी बॉन्ड जब भी बॉन्ड एनर्जी टर्म में आंसर आ जाए, सवाल आ जाए, तो आपका आंसर बॉन्ड लेंथ में होता है, आपका आंसर साइज ऑफ एटम में होता है, आपका आंसर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में होता है. तो शुड बी वेरी क्लियर. ठीक, ये इक्विलिब्रियम व्हिच यू कैन डू व्हेन यू गो बैक होम from this, oh sorry, not home, right? I was in the flow. So when you go back from this webinar, you can do this question as well, and you can check it from June 17 to 2. Okay, so that's how we observe rate of reaction chapter, and this was happy learning. Enjoy.